First part is we need to write C program or C++ anything to solve linear equations via Gauss-Seidel and Jacobi. So anyone who has seen the lecture can understand what is the iterative method. Up till now we were using direct methods. This is an indirect method. So we are actually taking a initial guess and then iterating over the initial guess, iterating over the number of equations and finding the updated values of the variables till all the variables are converged to a given tolerance value, right? And these two methods are very similar, only a slight difference. First of all, you have to write a general program, write a C program to solve n linear equations. So this is a general program. And also, can anyone tell what is the important criteria to solve any equation, any set of linear equations with this method? What is the important criteria that needs to be followed? Diagonally dominant matrix. Yes, exactly. So you need to check that whether the matrix Whether is the diagonal diagonally element is. dominant or not. हाँ, But क्या over बोल here the condition is different. I guess इसमें condition दिया है कि diagonal, like the diagonal element should be the biggest, like it should be greater than the summation of all other elements, modulus of summation. Yes. तो अगर वो नहीं हुआ satisfy तो Then we'll have to make फिर it वो diagonally exchange करना dominant. पड़ेगा. हाँ, वो करना पड़ेगा. But you can just check कि diagonally dominant है या नहीं. If नहीं है, then you can just print this is not diagonally dominant. Okay. Oh. If Or you else we want can still to continue but keeping exchange, the lambda very low. okay, that is also one thing. But that is also we can do. But you'll not be sure कि उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा. Yes sir. ठीक है, वो भी कर सकते हैं कि अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है देन वी कैन चूज लैम्डा वेरी स्मॉल एंड देन यू कैन प्रोसीड अहेड विद द गॉस सीडल, राइट? ठीक है. सेकेंड पार्ट में ओके, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन जैकोबी एंड गॉस सीडल, एनीवन? Yes, Vanya, you were saying something. So the values are updated midway in Jacobi, I think, and in Gauss-Seidel they are not. It takes one full iteration first. In Gauss Seidel, the values are updated. Updated values are used in every step. I mean, right? And in Jacobi, the old values are used, right? Right. Okay. This is only the difference. In Gauss Seidel, you take the updated values of the variable in every step. So there will be n equations in every step. You need to find uh, you need to find the values of n different variables in every step. But when you find one of the variables or a number of variables, you can use the updated variable in that step for finding out the next set of variables. So that is Gauss Seidel, and Jacobi is you just use the previous iteration variable, which is x old. And yeah, okay, so that is also fine. तो एक डाउट है हाँ बोलो. कि जब हम लोग लैम्डा से अपडेट कर रहे हैं वैल्यू को तो लाइक एक्स न्यू इक्वल टू एक्स न्यू इंटू लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा इंटू एक्स होल्ड करते हैं तो ये चीज़ हम सपोज लाइक हम लोग 25 इटरेशन जा रहे हैं और हम लोग को 12th इटरेशन पे रियलाइज हो रहा है कि जो हम लोग के न्यू और ओल्ड एक्स की वैल्यू उसकी टॉलरेंस लेवल से बहुत ही ऊपर है मतलब कि इट इज डाइवर्जिंग ऐसा करके तो हम लोग इसको लगाएंगे कैसे लाइक हम लोग 20 हम लोग लाइक अगर 13th इटरेशन पे रियलाइज हो रहा है तो 13th इटरेशन को x मतलब कि तो 13th इटरेशन को x ओल्ड लेंगे क्या और उसके बाद x से निकालेंगे या फिर हम x न्यू की भी तक वैल्यू चाहिए होगी. नहीं, तुम क्या बोल रहे हो कि लैम्डा की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, ये पूछ रहा? नहीं वो तो हाँ डाउट है ही बट मेरा अभी फिलहाल का डाउट ये था कि लाइक
हम लोग x न्यू और x ओल्ड कैसे, मतलब x ओल्ड जो होगा वो ओके आइटरेशन होगा जहाँ हमें रियलाइज हो रहा है, या फिर हम पहले जाके लेंगे x ओल्ड? एक्स ओल्ड वो जस्ट प्रीवियस वाला इटरेशन होगा ना, जो प्रीवियस इटरेशन में वैल्यूज आई। तो अगर 13th पे आई एम रियलाइजिंग कि टॉलरेंस एक्सीड कर रहा है, जबकि इट वुड हैव आल्सो इम्प्लाइड कि 12th में भी एक्सीड कर रहा होगा, सिर्फ जहां मैंने रियलाइज किया कि एक्सीड कर रहा है वहां पर मैं चेंज करूंगा। मतलब तुम बीच में वो बीच में कैसे चेंज कर दोगे? मतलब पर फिर उसके बाद आगे वाले सारे स्टेप नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो मैं मानता हूँ, बट एटलीस्ट फिर एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी ना अगर पहले से ही चेंज कर पाए। लाइक अगर हमने रियलाइज किया कि 13 स्टेप में टॉलरेंस बहुत ज्यादा है, तो मतलब उसके पहले भी ज्यादा ही हो रही होगी अगर हमने चेक ना किया हो तो। नहीं मतलब वो डाइवर्ज करेगा या कन्वर्ज करेगा ये तो तुम्हें पता नहीं होगा ना, ये तो तुम्हें या तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि इफ इज दिस डायगोनली डोमिनेंट और नॉट। इफ यू हैव नॉट चेक्ड देन वॉट एवर द वैल्यूज ऑफ जो भी एक्चुअल वैल्यूज है सॉल्यूशन की, और तुम्हारी जो वैल्यूज आ रही हैं स्टेप्स में, तो तुम अगर देख रहे हो कि वो उससे टॉलरेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो फिर टॉलरेंस नहीं मतलब कि डिफरेंस बहुत बढ़ रहा है and it is not converging, तब you can say कि this is not working and you need to use something else. फिर स्टार्टिंग फिर हम लोग नया गेस वैल्यू, नई गेस वैल्यू लेंगे मतलब। Yes, नया गेस वैल्यू जनरली लोग 0 0 ही लेते हैं, so नया गेस वैल्यू it's not it's not the convention तो 0 0 ही होता है। अगर इनिशियल गेस दिया है जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, तो you can try different, but you'll have to see कि why you are taking new guess values. Okay. ओके कोई और कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में यू नीड टू दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर रिपोर्ट ऑल्सो, कि यू हैव टू फाइंड आउट एरर वैल्यूज अप टू दिस इटरेशन। ओके, सो इन एरर वैल्यूज के थ्रू पता चलेगा कि किससे तुम जल्दी कन्वर्ज कर रहे हो, जैकोबी से या गॉस सिडल से। it will also depend on what is the initial guess कि तुम किससे converge कर रहे हो better, so so that will give you can also, I mean, just a suggestion, you can also try different guess, initial guess, so that you can just observe if you have time. Otherwise that is not necessary actually in the report, but try different guess to guess initial guess for your own understanding कि वो actually कर क्या रहा है, एक्चुअली वो डाइवर्ज कर रहा है या फिर कन्वर्ज कर रहा है। आई मीन इनिशियल गेस चेंज करने पे हो क्या रहा है, वो तेज़ी से कन्वर्ज कर रहा है या स्लोली कन्वर्ज कर रहा है, दैट डिफरेंस यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज दैट इज नॉट नेसेसरी। या एनीवन सेइंग समथिंग? सर तेजी से कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हमें बहुत सारे वैल्यूज देख के पता चलेगा ना, लाइक मतलब हमें कंपेयर करते रहना पड़ेगा। जस्ट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके बहुत दैट। सारे वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब 2 3 अगर जैसे 0 0 बोल रहे थे ना अभी तुम, हाँ कैन ऑल्सो ट्राई 0 0 हियर, जस्ट यू हैव टू रन, एक कोड ही तो रन करना है, नहीं, राइट? मैं जनरल वैसे पूछ रहा था कि तेजी से कन्वर्ज मतलब जैसे यहाँ पर तुम लोग नहीं, क्योंकि प्लॉट करेंगे तो पता चल जाएगा। so in the report if you plot this much also, what is written in the question, that is also fine. Okay, मतलब ठीक एडिशनल वैल्यू करके डाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, additional whatever you want to do you can do if you have time. uh, in the so this is important for the report, and in the first part also you should write something in the report. What is the, I mean, okay, so what is the use of this Gauss Seidel? Maybe you can write why don't we use Gauss elimination only always, right? So you can write these things maybe in the report. Okay, just to give you an idea. The convert so now convergence of Gauss Seidel technique can be speeded up using successive over relaxation. Okay, you know what is over relaxation, and सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन में यही है कि लैम्डा को यू आर कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग द लैम्डा, तो उससे
accelerate हो रहा है process convergence का. You know that it is diagonally dominant, so it will converge. Just that you want to converge it at a fast pace, so you are constantly increasing the lambda. Okay. So second सर वैसे question, इससे वैल्यू में डिफरेंस आएगा क्या अगर हम लैम्डा को चेंज करते हैं तो मतलब फाइनल वैल्यू में डिफरेंस आएगा, ओके बट हो सकता है वो टॉलरेंस लेवल पे कम हो लेवल हमें चेंजेस करना पड़े वो कन्वर्ज कराने के लिए. बट आई थिंक स्लो कन्वर्जेंस बेटर कन्वर्जेंस होगा इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन. But this will give you faster conversion which you may be needing, because in real world you need, I mean you have to do many calculations, right? So faster convergence is better than, I mean all, most times faster convergence is the preference, right? ठीक है. Okay, anyone having doubt in first and second question? तो कमेंट सेक्शन में लिखा है. क्या लिखा है? Okay, we have to, yes, you have to write two separate codes for GS and GI because the algorithm is different in both the methods, and what should be taken as the tolerance value in first question. So what do you think should be taken as tolerance value? Batao. I think you have written 2-3 codes now. What do you think should be tolerance value? C++, yes, C++ can be used, no problem. 10 to the power minus 4. So keep it at least 10 to the power minus 5 or 6, right? Minus 4 is a bit high. Minus 5 or 6 le lo, that is fine, and below that it is better if you keep it 7 or 8, but we will consider till minus 5 also, that is also fine. तो यहाँ भी टॉलरेंस वैल्यू जो मैंने सर बोलते हैं परसेंटेज होती है ना. टॉलरेंस वैल्यू परसेंटेज बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? परसेंटेज एरर बोल रहे हो क्या? हाँ मतलब जब हम लोग टॉलरेंस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट एरर मतलब दो एरर्स के बीच के डिफरेंस तो राइट. हाँ, दैट परसेंटेज एरर, राइट. ठीक है. Anything else in the first two questions? Okay. Simple assignment, right? This is simple thing. कोई कुछ बोल रहा है? सर सेकंड वाले में कोड में 25 आइटरेशंस प्रिंट करनी है, लाइक टू गेट ऑल द वैल्यूज, और डू आई जस्ट प्लॉट द Okay. So second, what all you need to do, up to 25 iterations, draw this thing. Yes, you need to do at least 25 iterations. If your convergence criteria, I mean I don't know when will it stop, but also you need to find the solution here, right? You need to find the solution. Okay, solve the matrices in question 3. I got a bit ahead, so you don't need to find, I mean 2 and 3 you can do it with the same code. We can discuss 3 later, but you need to do 25 iterations, then only you'll know what is the error, right? An error of I summation is there, error of I square summation. So error of every variable's error, you need to sum it up and then you need to plot it, so keep that in mind. And then moving on to the third question, you need to find the solution of question 2 with the same guess value with SOR और W को 1.5 लेना है, and make a comparative study with GS method to see. Okay, so in the third question you have to do two things. You will have to write two programs for this.
in one of the programs you will do the GS method. And what is the GS method? Constantly using the new updated variable in the same step, and the successive over relaxation method, in which you have to use W or lambda, whatever you call it, as 1.5. Okay, and you have to compare both the things. So you need to think about how you can compare these two things, right? And okay, solution is also given. So in the report you can also mention what are the challenges you faced based on your solution and the correct solution. So if there is a mistake, or if it doesn't match, you can maybe try to find out what is the issue with it. Otherwise it should match. Okay, and the difference in in your solution with GS and successive or over relaxation with lambda equals 1.5 compared with the actual solution, you need to give some explanation. What is the difference? What is the difference with the solution which you got from GS, and what is the difference in with compared to the SOR when you have the actual solution is this. So is that your question, Vanya? Solve करना है या नहीं? Sir, do we have to make 5 codes then in the total assignment? Like two in the first one, Yes. one in. 2 in the first one, 1 in the I think 2 in the second one. I think the first one only will serve the purpose of the second one, right? Right, yes. You just have to do it for 25 iterations. Just tweak it a little bit, and okay. So don't think of it as too many programs. The first one will serve the purpose of all the three, but you have to tweak it a little bit. You have to put the initial guess and all. फिर एक्सेल शीट भी अटैच करनी है. एक्सेल शीट, यस, एक्सेल शीट तुम्हें डालना पड़ेगा क्योंकि 25 इटरेशंस तो ज़्यादा नहीं है, तो डाल सकते हो एक्सेल शीट भी. एंड ग्राफ तुम्हें इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? Sir, I had one doubt. How would we be taking input for the first question, like system of equation and initial guess, while writing the general code? Okay, we will give you a sample input for that. So it would be a text file this time as well. Yes, it will be a text file. ओके. ऑल्सो मतलब हमको सेकंड वाले के लिए सेपरेटली कोड लिखना है क्या? मतलब पहले वाले में ही डाल के सिर्फ एक्सेल शीट में प्रिंट करवा दे तो नहीं चलेगा? हाँ, exactly. You can do that also, right? If you take input, so if you give the sample input as like you need to take initial guess also, and you need to take the matrix. Then you just have to run it for 25 iterations in the second one, right? हाँ मतलब So whatever you do, 25 you just इटरेशंस के लिए लिमिट कर सकते हैं, वरना हम ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ 25 इटरेशंस पे मतलब एक्सेल शीट में पूरा प्रिंट करवा दे और फर्स्ट 25 इटरेशंस का ही ग्राफ बनाए, बिकॉज बेसिकली तो हमें ग्राफ्स ही कंपेयर करना है ना. मतलब हाँ, आई एम नॉट श्योर. that is fine. Right, you can figure it out कि तुम्हें दोबारा बस अगर तुम्हें दोबारा लिखना है तो you need to add just 25 iterations, or you need to stop at 25 iterations, right? Otherwise you need to also solve it in third part, right? So थोड़ा थोड़ा tweak करना है बस every step में. तो अगर if you give different files, it will not be like you need to write different code for every step, every question. You need to just tweak it a little bit and make it another file. You can do that. That will also be good. Okay. ओके. एंड ऑल्सो एक स्लाइट कन्फ्यूजन थी क्योंकि मतलब सेकेंड की लैंग्वेज में है कि SOR can be used. So is it mandatory to use SOR for the second question or is it optional? Okay. I think
you need to do GS and Jacobi only in the second question. SOR so anyway you need to use SOR in the third part. So you can use GS and Jacobi for the second part. Okay. Okay, thank you, sir. सर SOR जब आप थर्ड क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे तो हम आपने बोला कंपेयर करना होगा हमें नॉर्मल से, और एक मतलब हमने नॉर्मली जो हम आउटपुट आ रहा होगा वो, और उसको कंपेयर करेंगे पैरेलली फ्रॉम जब हम बार बार एसओआर कर रहे हैं उसमें, तो सक्सेसिवली कर रहे हैं मतलब कि हर बार आप एक्स न्यू की वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो फिर कितने बार कर रहे हैं, या फिर उससे एक ही बार करना होता है? I mean, हर step में for every variable you need to just add the formula, right? Okay. You need to add xi or whatever it is, xi equals xi lambda xi new plus 1 minus lambda xi old. Just only this thing you have to add. I thought it was a one time process, like एक बार बीच में कहीं कोड में ऐड करना होता तो हो जाएगा. Yes, हाँ वो obviously यही होगा. So in question 2, can we use Excel sheets instead of C program? The second question, why do you want to there's- use Excel sheet? Because you have will already write the program in the first part, right? Yeah. You can use that program to find the second part. Okay. सर एक एडवाइस लास्ट क्वेश्चन टाइप का था कि लाइक जब आप बोल रहे हो कि हम लोग टेक्स्ट फाइल से इनपुट लेंगे वगैरह, तो उसमें हम लोग लिखते हैं कि हम कौन से टेक्स्ट फाइल से ले रहे हैं, उसका नाम क्या है, तो फिर क्या आप एक स्पेसिफिक टेक्स्ट फाइल का नाम दे दो जो हम सब लोग लिख दें, तो फिर आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने टेक्स्ट फाइल का नाम, या फिर मतलब जैसे हम जब भी फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं इक्वल टू हम लोग बेसिकली ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट फाइल का नाम लिखते हैं जिससे हम इनपुट ले रहे हैं, तो अगर वो नाम आपके सैंपल नाम से मैच नहीं करेगा जब फाइनली आप चेक कर रहे होगे आफ्टर सबमिशन, तो फिर आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा या चेक करना पड़ेगा कोड में कि हम लोग ने क्या नाम से सेव किया है. ठीक है, तो वॉट एवर वी गिव सैम्पल इनपुट वही नाम यूज कर लो. ठीक है. ठीक है. Also we are expecting the output also comes in a text file, right? Some of you asked me last time, wanted to clarify this thing.
Okay, so you understand what all you have to do uh, in terms of the report and the code, what we are expecting. Okay, uh, in the first part, just check it that whether it is diagonally dominant or not, and if it is not, just give a error statement. Otherwise, don't have to make it diagonally dominant, just have to check it. तो रो ऑपरेशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, मतलब नहीं रो ऑपरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सचेंज नहीं करना होगा रोज को बिल्कुल रो ऑपरेशंस तो नहीं, मतलब रो एक्सचेंज अगर डायगोनली डोमिनेंट वाले को लाना है, डायगोनली पिवटिंग, डोमिनेंट बनाना नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें चेक करना है। ठीक है, थैंक यू। So take this time to think about the solution, and if any doubt arises, हाँ ठीक है, बोलो बोलो बोलो। सर ये पहले वाले क्वेश्चन में अभी आपने बताया था ना कि यार अभी बताया था। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वो तुम आ गए कैंपस? नहीं कैंपस में नहीं आया मैं, वो ग्राफ वगैरह तो मैंने सेकंड असाइनमेंट में था नहीं, तो मैंने बनाया नहीं। बने होगा तो मैं देख लूंगा, किसी ना कैसे बना लूंगा। तो सही है, इसमें मेरे को कंफ्यूजन है। हाँ, पहले क्वेश्चन में सर ये गॉस सीडल मेथड से अभी बताया ना आपने, डायगोनल डोमिनेंट होना चाहिए, तो वो बस हमें चेक करना है। अगर डायगोनल डोमिनेंट नहीं है तो क्या एरर बता स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि दिस इज नॉट डायगोनल डोमिनेंट, ठीक है। एनी एरर स्टेटमेंट वुड बी फाइन, ठीक है। ठीक है। और सर ये आइट्रेशन जो होगी, मतलब कहाँ तक ले आनी है? इटरेशन जब तक कन्वर्ज नहीं हो तब तक इटरेशन करना है तुम्हें। मतलब वो टॉलरेंस लेवल से देखना पड़ेगा ना उसके लिए, दो कन्वर्जेंस कंसेक्यूटिव वैल्यूज क्राइटेरिया तुम्हें एरर से चेक करना पड़ेगा, टॉलरेंस लेवल को एरर से, ठीक है। ठीक है। और सर ये थर्ड वाला क्वेश्चन बताना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलो। सर इसमें बता दो जरा, इसमें क्या है कि प्रोग्राम में थ्रू हमें दिखाना है, मतलब कंपेयर करना है हमें तो इसके अंदर, ओके, जैसे एसक्यूएल मेथड से और सीएस मेथड से। थर्ड क्वेश्चन तो में तुम्हें दो प्रोग्राम्स लिखने हैं। यू नीड टू राइट द जीएस मेथड प्रोग्राम। व्हाट इज द जीएस मेथड प्रोग्राम? इसमें एक्स न्यू यूज करते हैं, एंड व्हाट इज सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन? लैम्डा इक्वल्स 1.5। जीएस में क्या है, लैम्डा इक्वल्स 1 है, राइट। एंड जकोबी में लैम्डा इक्वल्स 0 है, बट सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन में लैम्डा इक्वल्स 1.5 है। सो कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स, तुम्हें कंपैरेटिव स्टडी करना है, राइट। कंपैरेटिव स्टडी कैसे कैसे कर सकते हो? फ्रॉम द सोल्यूशन, फ्रॉम द एरर्स। सो दीज टू थिंग्स आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ. If you think more, you can add that in your report. That will be good. Otherwise, these two things are also fine. And you need to write your interpretation, and which one would you prefer in this one? Any interpretation which you get from the solution or errors. सर एसओआर और जीएस को दोनों को अलग अलग जो है रियल सॉल्यूशन से ना कंपेयर करना है, ऐसे ही है ना, या उन दोनों को भी करना है आपस में? I mean, इसको जितने भी तरीके से कंपेयर कर सकते हो, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है। कंपैरेटिव स्टडी में तुम क्या कर सकते हो, राइट। एरर्स को कंपेयर कर सकते हो, तुम उसके प्रोग्रेशन को कंपेयर कर सकते हो, सॉल्यूशन को कंपेयर कर सकते हो, मैंने बता ही दिया। कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो सही, लेकिन आइट्रेशन के हिसाब से करेंगे ना कि इस आइट्रेशन में जीएस मेथड को कंपेयर करेंगे एसओआर से, ऐसे ना?
देखो आइटरेशन में भी कर सकते हो, आइटरेशन में भी कर सकते हो, बट इफ इट इज़ 100 आइटरेशन तब तुम क्या करोगे? तो 100 आइटरेशन कंपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। प्रोग्रेशन कंपेयर कर सकते हो कि कैसे प्रोग्रेस हो रहा है जीएस में, कैसे प्रोग्रेस हो रहा है एसओआर के थ्रू। इफ़ इट इज़ आई मीन 5 to 10 आइटरेशंस उसमें ही कन्वर्ज हो रहा है, तब तो तुम सारे आइटरेशंस भी कंपेयर कर ही सकते हो। ठीक है। सर क्वेश्चन 3 में सॉल्व विद एसओआर एंड कंपैरेटिव स्टडी विद जीएस, तो जैकोबी का अलग से इस मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं करना, राइट? मतलब नहीं करना है, जीएस एंड एसओआर ओनली। ओके, थैंक यू। So just to remind you, I think we'll have 15 persons का वाइवा होगा इस वीकेंड, probably every week 15 लोगों का होगा, because we need to do at least 2 वाइवास for every person. So don't worry कि अचानक से नहीं आएगा information, we'll update you one day before. So that is also something not to worry about. And code में भी the deadline is Tuesday, code and report everything. So don't think कि अगर assignment link नहीं बना है तो I think वो नहीं होगा. Next thing is sample output we will give you today or most likely tomorrow. I mean latest tomorrow we will give you. So that should be fine, I guess, from your side, right? Anything else? So like question जो अपने second tutorial था, I could not do that thing which you told कि text file से input लेना from the code itself. तो मैं terminal से input दिलवाता था, like I used to redirect the path of the input like from the terminal to ठीक the है, text. तुम्हारा तो मुझे पता है, तुमने बता तो ही दिया. should I show you कि कैसे करते हैं, like मतलब just for reference नहीं, अगर आप it's not necessary. Just अगर तुमने रिपोर्ट में मेंशन किया है तो that's fine. ठीक है ठीक है, we'll check you because we'll check your report and your code simultaneously most probably. And so we'll no ऐसा भी नहीं होगा. I think someone asked कि अगर हमारा कोड नहीं चल रहा है तो हमारे 0 मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. So it won't be as binary because report is to supplement कि तुमने actually तुम्हें आता है या नहीं. If you don't write a report in just the code, that is also not fine. So report is necessary because that shows your understanding, right? Because you are writing in your own words, writing something in your own words. So that is, I think I would say कि report is more important than the code. So because report will show कि you know what you're talking about or what you're writing in the code, right? So give some more time to report, and whatever you do in the code, whatever the issue is, you should mention in the report. And so this is 3 questions, right? So we are not expecting कि तुम 15-20 pages का report बनाओ. We are expecting कि 3 to 4 pages, 5 pages. If you are adding pictures, तो I think it will get extended. Otherwise 3 to 4 pages is fine. सर कंपैरेटिव स्टडी थर्ड क्वेश्चन में उसमें ग्राफ्स और फिगर्स के थ्रू ही होगा ना, या फिर मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम उसमें लिखा है डू थिंग्स वाया कंप्यूटर प्रोग्राम. Yeah, graphs, you can compare it with graphs, right? You can compare it with the error graph what you have plotted. So
that also you can do. You can compare with the final solution and actual solution. Like फिर हमें बस आउटपुट नहीं चाहिए ना कंपैरेटिव स्टडी का, मतलब एक कंप्यूटर आउटपुट नहीं चाहिए, हमें ग्राफ से भी कर सकते हैं एक्सेल शीट से बेसिकली। हाँ 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 हाँ, मतलब ग्राफ, ठीक है, कैन डू इट एक्सेल शीट, ग्राफ एक्सेल शीट में बना सकते हो उसमें, ठीक है। And sir, when will we get the assignment marks, like, or a feedback or reports? Okay, so I think it will take some time. I'll not be able to tell you now, but we will try कि minor से पहले तो कुछ आ ही जाए, है ना। minor से पहले we'll try to give the assignment marks. सर ये मार्किंग कैसे होता है सर, मतलब कि कैसे अगर कोई कोड गलत हो गया तो उसके पूरे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे ना, अगर उसका रिपोर्ट भी लिखा है तो अच्छे तरीके से? हाँ, तो वो मैंने बोला ना, रिपोर्ट में यू नीड टू मेंशन कि रिपोर्ट विल जस्ट शो कि तुमने किया है या नहीं। तो हाँ, तो आई सेड दैट, राइट, रिपोर्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कोड, बट code also has the weightage, report also has the weightage, so both the things you need to do properly. Okay. Anything else? I think we have one more minute. Second, I think somebody asked something. So I think we can end the meeting. Yeah, don't need to make diagonally dominant. Someone asked, I think. Just check it. That is also fine. Because their doubt session will start, and you guys have to join your class meeting link for the doubt session.